شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے، اب مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فی آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فی آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا، سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر علام آئے، آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر علام آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? सेहत अच्छी होगी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना मेज़बान राव कमर रिजवान CVFM रेडियो के स्टूडियो से रमज़ान मुबारक का खसूसी प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम लिए आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। और आपके लिए आज ढेर सारी दुआएं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 6 अप्रैल 2022 और दिन है बुध का। और दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह बहुत सारी सेगमेंट्स के साथ फुली लोडेड है, और जिसमें कि हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, रोज़े के हवाले से बात की जाएगी, और कुछ अहम वाक़यात भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और आप लोगों की फ़ोन कॉल्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। रोज़ाना की तरह आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमें कॉल करके बाकायदा हमारे प्रोग्राम के हवाले से, इसके अलावा हमारी जो नशियात हैं, दीगर प्रोग्राम जो हमारे पेश किए जाते हैं, उनके हवाले से भी आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01642688 इस पर मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज़ में एक हदीस मुबारक आपकी नज़र करता हूँ। बुखारी शरीफ की ये हदीस मुबारक है। हदीस नंबर है 1903। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो झूठी बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। रोज़ा एक ऐसी बदनी इबादत है जिसकी बरकत से इंसान अपने आप को ज़ाहिरी गुनाहों के साथ साथ बातनी गुनाहों से भी बचा सकता है। अगर कोई शख्स बज़ाहिर खाना पीना तो छोड़ दे, लेकिन गुनाहों के कामों से अपने आप को ना बचाए तो वो रोज़े का मकसद हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया गया कि उसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह पाक को कोई हाजत नहीं, कि उसने हलाल चीज़ों को तो तर्क कर दिया, लेकिन जो काम यानी झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, नमाज कज़ा करना, फिल्में ड्रामे देखना, बदनिगाही करना, लोगों को धोखा देना वगैरह, ये हराम थे, इनसे अपने आप को ना बचाया तो उसके रोज़े का क्या फ़ायदा। अल्लामा बदरुद्दीन महमूद अलैहि रहमहुल्लाह इस हदीस के तहत फरमाते हैं, जो बंदा रोज़े की हालत में भी झूठी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े, जो कि अकबरुल कबायर यानी बड़े कबीरा गुनाहों में से है, उसे सोचना चाहिए कि वो अपने रोज़े के साथ क्या कर रहा है। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि जो शख्स अपने आप को गुनाहों से ना बचा सके वो रोज़ा ही ना रखे, बल्कि मकसद ये है अपने आप को गुनाहों से बचाए। इस हदीस में राज ये है कि मुबाह चीज़ों यानी खाने पीने और सोहबत से परहेज करने से बारगाहे इलाही में मकाम कुर्ब उसी वक्त ही मिल पाता है जबकि हराम करदा चीज़ों से भी बचा जाए। लिहाजा जो भी हराम काम करे और मुबाह चीज़ों को छोड़कर अल्लाह पाक का कुर्ब पाने की कोशिश करे, वो ऐसा ही है जो फ़र्ज को छोड़कर नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश करे। यहाँ झूठी बात से मुराद हर नाजायज़ गुफ्तगू है। झूठ, बहतान, गीबत, चुगली, तोहमत, गाली, लान तान, जिनसे बचना फ़र्ज है। और बुरे काम से मुराद हर नाजायज़ काम है, आँख का हो, कान का हो या हाथ पाँव वगैरह का, चूँकि ज़ुबान के गुनाह दीगर आज़ा के गुनाहों से ज़्यादा हैं, इसलिए इनका अलहदा जिक्र फरमाया। ये हदीस बहुत जामे है, सिर्फ 2 जुमलों में सारी चीज़ें बयान फरमा दी हैं। अगरचे बुरे काम हर हालत में और हमेशा ही बुरे हैं, मगर रोज़े की हालत में ज़्यादा बुरे कि उनके करने में रोज़े की बेहुरमती
और माह रमज़ान की बेअदबी है, इसलिए खसूसियत से रोज़े का जिक्र फरमाया। हर जगह एक गुनाह का अजाब एक, मगर मक्का मुकरमा में एक गुनाह का अजाब 1,00,000 है। क्यों? उस ज़मीन पाक की बेअदबी की वजह से। क्योंकि जिस तरह से रमज़ान मुबारक में अगर अल्लाह ने आपके लिए सवाब को इसी तरह से बढ़ाया है कि अगर आप फ़र्ज़ अदा करते हैं तो आम दिनों के 70 फ़राइज़ अदा करने के बराबर है, तो इसी तरह से उस जगह और मकाम के हिसाब से उसकी बेअदबी की वजह से अल्लाह ताला ने गुनाहों को भी उसी तरह से बताया है। अगर मक्का में आप गुनाह करते हैं तो उसकी बेअदबी की वजह से गुनाह का अजाब भी उसी तरह से अल्लाह ताला ने बढ़ाया है। तो इसलिए दोस्तों, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इस माह मुबारक के हर लम्हे से भरपूर फ़ायदा उठाना है। हमारे पास मौका है कि हम अपने तमाम किए हुए गुनाहों से इस माह मुबारक में अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होकर माफ़ी तलबी करें। हमारे पास बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला से दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की बरकतों और फजीलतों से सही तरह से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक कलाम, उसके बाद वापस आकर अपनी बातों के सिलसिले को यहीं से जारी करेंगे। सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम। मुझे कहते हैं राव कमर रिजवान। CBFM रेडियो की ये खसूसी नशियात, जिसमें आप ये प्रोग्राम का सिलसिला रोज़ाना रात को 10:30 से 12:30 बजे सुनते हैं। चलते हैं इस कलाम की जानिब। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल
राइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये खूबसूरत सा कलाम अभी आपने सुना, लजबाल नबी मेरे। इसी दौरान में हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे प्यारे भाई नेमतुल्ला और साथ में सायरा बहन थी। कहती हैं जी मौसम बहुत अच्छा है, बाहर जाने का प्लान था लेकिन नहीं गए। तो कहते हैं जी प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ ही ये हमेशा प्रोग्राम में शामिल होती हैं और मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। और कहती हैं जी कि मेरी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो हम दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और माँ का साया जो है वो इसी तरह से सर पे कायम रखे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, अपनी प्यारी बातों और ढेर सारी दुआओं से हमारे दिल को आपने मोह लिया है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। ढेरों दुआएं आपके लिए मेरी बहना, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बात हो रही है रोज़े के हवाले से। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हमें किस तरह से किन गुनाहों से बचना चाहिए रोज़ों में ख़ास तौर पर, क्योंकि जिस तरह से अल्लाह ताला हमें सवाब ज़्यादा देता है, तो अगर कोई गुनाह होता है तो उसका उसी तरह से गुनाह जो है वो भी ज़्यादा मिलता है। और कौन सी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना, ग़ीबत करना, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हाजत ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ज़रूरतों से पाक है, बल्कि बमानी तवज्जो, यानी अल्लाह ताला ऐसे शख्स का रोज़ा कबूल नहीं फरमाता, कबूल ना होने से रोज़ा गोया फाका बन जाता है। इसमें इशारतन फरमाया गया है कि रोज़ा शरन तो दुरुस्त हो जाएगा कि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मगर कबूल ना होगा। यानी कि अगर आपने झूठ बोला, ग़ीबत की, इस तरह की कोई हरकत हुई, तो रोज़ा तो वो एक फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन कबूल ना होगा। तो अगर कबूल ही नहीं हुआ तो फिर हमें क्या फ़ायदा। तो इसलिए रोज़े का असल मकसद जो है वो तभी पूरा होता है कि जब हम उसके तमाम फ़राइज़ को पूरा करें, तमाम उसके आदाब का ख्याल करें और उसको उसी तरह से रखें जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने रखे। यानी कि उनका जो मामूल होता था रोज़े के दौरान, वही हमारा मामूल होना चाहिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के हवाले से बात हुई है, तो आपको ये भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के महीने में क्या मामूलात होते थे, किस तरह से वो अपना वक्त गुजारते थे। लेकिन अभी स्टूडियो सी घड़ी मुझे ये कह रही है कि इस वक्त छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाता है। अभी चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद वापस लौट कर आएंगे तो अपनी इस बात को यहीं से शुरू करेंगे। CVFM Ramadan Live in association with Clucky's Fried Chicken, where you get the real food, real taste, real fast. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल-मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल-मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूँ। कोई नहीं जी, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। Al-Makkah Halal Meat and Cash and Carry, 303 to 307 Lintop Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487. Are you planning a nikah, mehndi, wedding or any other special event? Then make it lavish with the help of Lavish Occasions. Here at Lavish Occasions, we specialise in creating spectacular Asian weddings, and we pride ourselves on giving your function the wow factor. Our service includes bespoke floral decor for centre stage, walkway, table arrangements and much more. For more information, contact our event consultant on 078 37 360 504
or email lavish.occasions@outlook.com. Search by Lavish Occasions Middlesbrough on social media and follow us for inspiration and ideas. Lavish Occasions, luxury bespoke services, providing quality decor for all occasions. Mist Lounge, Middlesbrough's premium food and dessert lounge. Come and enjoy the finest selection of sumptuous desserts and our famous mixed grill in a relaxing atmosphere with your family and friends. We also have pool and snooker tables available for hire for your enjoyment. If you're a sports fan, then we have a treat for you too. We readily showcase live sports events from around the globe, providing an atmospheric environment for your viewing pleasure. Mist Lounge, located at 339 Linthorpe Road, Middlesbrough, 01642 82 20 20. Follow us on social media for regular updates and offers. Search Mist Lounge Middlesbrough. Mist Lounge. Food, desserts, pool, snooker, live sports, all under one roof. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. AAA Car Sales Limited, a family-run car dealership based in Darlington. When buying from us, you have the comfort of knowing that every car has to pass a rigorous 72-point check before it is approved for sale. And all of our cars come with 12 months MOT, 12 months free breakdown cover, and up to 6 months AA warranty. At our showroom, we have a selection of up to 70 cars from £4,000 to £20,000, so it's easy to find the right car for you. We offer quick and fast finance to allow you to purchase the car of your dreams. Our special offer during Ramadan means that you'll currently get £500 off the marked price of every vehicle when you quote the promotion code Ramadan. Visit our showroom now at 396 Westall Road, Darlington, before you miss out on this amazing deal. We also buy vehicles for cash, so call Abby today on 077 199 65318 to get the best valuation of your car, or visit us at www.aaa-carsales.co.uk. AAA Car Sales Limited, the name you can trust for quality used cars. Terms and conditions apply. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business, we can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business, specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint, Unit 2, Victoria Street, Middlesbrough, just opposite Lidl. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. CVFM Ramadan Live in association with Kashmir Food Store, your food specialists. सो दोस्तों, मैं बात कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम CVFM। नियामतें बढ़ती हैं, खुशियां दिखती हैं, बरसात है रहमतों की, सादतों की, बरकतों की, ताज़ा हो जाता है ईमान, यही है रौनक़े रमज़ान। आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो की खुसूसी रमजान नशरिया 104.5 FM पर। या इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुहम्मद रसूलुल्लाह
يا حبيب الله الله. إبراهيم خليل الله، إسماعيل ذبيح الله، علم لخلق الله لا إله إلا الله. ذنف مع أهله فاستمد على الجود، ما كان يقوله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، إنك أنت عليم الحكيم. الله أكبر الله أكبر، إنه هو الصواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر، وهدى والبشرى للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر، إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله عزيز الحكيم. قال لنا إسرائيل إسرافيل ميكائيل، أعظم لنا جبرائيل. لا إله إلا الله. يا الله أرحمنا واحفظ من أعدونا، زين في لساننا لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، إنك أنت عليم الحكيم. الله أكبر الله أكبر، إنه هو الصواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر، وهدى والبشرى للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر، إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله عزيز الحكيم. CVFM Ramadan Live in association with Clucky's Fried Chicken, where you get the real food, real taste, real fast. You're not aware, but we're aware of your despair. Don't show your tears to your oppressor. Don't show your tears. Try not to cry. What David slew Goliath. This very same place that we in. जालियां देखूं के दीवारों दरों बामे हरम, जालियां देखूं के दीवारों दरों बामे हरम, अपनी माज़ूर
तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। सुनो भाई, कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। दिल जो समझ ले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं, दिल जो समझ ले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। बस एक बार, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। बस एक बार, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है मदीना देखूं। काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश एक बार यूं ही उम्र बसर हो मेरी। सुबह काबे में हो तो शाम को तैबा देखूं, सुबह काबे में हो तो शाम को तैबा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। मेरी धुन है, मेरी आरज़ू है, मदीना देखूं मैं भी। मेरी धुन है, मेरी आरज़ू है, मदीना देखूं मैं भी। मेरी धुन है, मेरी आरज़ू है, मदीना देखूं मैं भी। बस एक बार, जी दोस्तों, अब तो बस एक ही धुन है, मैं भी मदीना देखूं एक बार। बहुत ही खूबसूरत सा कलाम अभी आपने सुना।
امید ہے کہ جی آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. جی دوستو، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو رمضان مبارک ہوتا تھا وہ کس طرح سے تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک میں کیا معمول تھا. تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم کسی حد تک ان کی زندگی کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس مہینے میں اپنی عادات کو ویسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے. رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی تھی. اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا میں اب تفصیل کے ساتھ آپ کو تھوڑا ذکر سناتا ہوں تاکہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں اور اجتماعی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات رمضان مبارک کو یوں میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا کہ رمضان مبارک کے دوران اپنے اوپر روزوں کی پابندی کو لازم ٹھہرا لینا ہے. رمضان مبارک کی راتوں میں نماز، تراویح، تسبیح و تحلیل اور کثرت سے ذکر و فکر میں مشغول رہنا ہے. دوران رمضان مبارک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کا معمول. پھر رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ایام بنیت اعتکاف مسجد میں بیٹھنا. نماز تہجد کی اگر بات کریں تو سال کے بقیہ مہینوں کی نسبت رمضان المبارک میں نماز تہجد کی ادائیگی میں زیادہ انہماک اور ذوق و شوق کا مظاہرہ، صدقہ و خیرات. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کیا کرتے تھے. اور رمضان کے مہینے میں معمولات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے. اور ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ان کا یہ استقبال شروع ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے آغاز کے ساتھ ہی دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر خصوصی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے: یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے. میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی خوش آمدید کہنے کا ایک بڑا خاص طریقہ تھا، اس کا استقبال کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے: تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو.
جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان اور شعبان میں روزوں کا اتصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ صرف ماہ شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اکثر اوقات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں چند کھجور اور سادہ پانی، کبھی دودھ اور ساتھ میں تلبیہ نوش فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح افطاری میں سادہ پانی یا دودھ یا پھر نبید استعمال کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی فروٹ مہیا ہوتا تو اسے بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ معمولات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو میں نے مختصراً بیان کیے ہیں۔ اگر ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح سے اپنے ماہ مبارک کو گزارتے تھے، تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ ستارے ہیں، ان کی زندگی کی چمک جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ان کی زندگی کا یہ ماہ مبارک کیسے گزرتا تھا، اس کا بھی بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام۔ اس کو سنیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں اس وقت آپ لوگوں کے لیے پلے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کلام ہے تیرے صدقے میں آقا۔ اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہوگی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں CVFM ریڈیو کی رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات، پروگرام آپ کا اپنا، جی ہاں، سیرات مستقیم۔ مجھے کہتے ہیں راؤ قمر رضوان۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کیجیے گا ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 016426888104۔ یہ ہے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر۔ آئیے اب چلتے ہیں اس کلام کی جانب۔ سارے جہاں کو دین ملا، دین ملا، دین ملا، تیرے صدقے میں آقا۔ سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، کرو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا
پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ Live from the heart of Middlesbrough, this is CVFM Ramadan Live. مومنو ماہ رمضان مبارک ہو سب کو مومنو مبارک ہو ہر کسی کو رمضان کی مبارک ہو کشمیر فوڈ اسٹور کی طرف سے سبٹیسا کمیونٹی اور ریڈیو رمضان کے سننے والوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو Kashmir Food Store. آئیے اپنے رمضان کو خوشگوار بنائیے کشمیر فوڈ اسٹور کے ساتھ یہاں آپ کو نہ صرف تازہ گوشت سبزی پھل اور مسالہ جات بلکہ گھریلو استعمال کی اشیاء جیسے برتن بھی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں آج ہی آئیں کشمیر فوڈ اسٹور 115-2123 ابنگٹن روڈ مڈلسبرہ ٹیلی فون نمبر 01642242426 Families Relief are working on a special Ramadan program that needs your help and support. Whether you would like to donate zakat, sadaqah, fidya or fitrana, your Ramadan donations will help us distribute food and clean water to impoverished families in needy countries like Pakistan, Yemen, Syria, Palestine and Africa. Help us to help them survive this Ramadan. Donate now on 0114-365-4454 or go online to familiesrelief.org.uk. Together we can save lives. Don't be a victim of crime. This Ramadan, take the steps to protect yourself, your family and your business with the help of Twin Security. Twin Security Systems is your one-stop for all your security needs. Specialists in alarms, CCTV for home or business, and even vehicle CCTV and tracking systems installed for your peace of mind. All brands supplied and fitted by our team of experts. We also offer PAT testing and all your electrical needs. LED security lighting, installation and maintenance. Twin Security Systems are checked and vetted approved, so you know you're getting a quality workmanship guaranteed. For a no-obligation free quotation, telephone us on 01642 687070. That's 687070. Twin Security Systems, keeping you safe. We know how difficult losing a loved one can be. That's why at Rose Memorials we have experienced and friendly staff who can help you make the important decisions when it comes to memorials and tributes. We make quality bespoke headstones with superior craftsmanship at competitive prices. We specialise in serving the needs of the Muslim community, offering Quranic verse and prayer engravings on our headstones. Our showrooms are open 6 days a week with a variety of memorials on show. So visit us at Cumberland Road, Middlesbrough, or a branch located at Harrogate Lane, Stockton-on-Tees. You can call us in Middlesbrough on 01642 820 795 or in Stockton on 01642 677 114. Rose Memorials, giving your loved one the memorial they deserve.
They say there are only two certainties in life, death and taxes. Here at Chauhan & Singh, your local chartered accountants, we can't help you with the first, but taxes is something we know a lot about. With nearly 50 years in business, we have the expertise and knowledge to help businesses of all sizes and sectors. We offer a comprehensive range of accountancy and tax services. Our team has expertise in annual accounts, payroll, VAT returns, and a range of personal services such as wills and inheritance planning. So, whether it's payroll, account management, or tax planning, you can rely on Chauhan & Singh, Chartered Accountants. Chauhan & Singh, 81 Borough Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 244 090. Visit our website for more information, www.chauhanandsingh.co.uk. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूँ परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट्स, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. CVFM Ramadan Live in association with Borough Carpets, offering every customer the red carpet welcome. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो की ये खसूसी नशियात प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम और आपका मेज़बान होस्ट एंड दोस्त राव कमर रिजवान आपके साथ। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01642688104। इस पर आप हमें कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बताते चलें कि आज है, अभी तो आप कह सकते हैं कि टाइम चेंज हो चुका है। मेरा और आपका साथ 12:30 बजे तक रहेगा और तकरीबन 1 घंटा हमारे प्रोग्राम का जो है वो बाकी है। इस वक्त आपको बताते चलें कि मैं इस कमर्शियल ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक जब आता था तो उनके मामूलात क्या होते थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद कि कोई उनकी आदत हम अपना लें और हमारी भी ज़िंदगी संवर जाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मशअल राह है। ये लोग दीन को समझने वाले और फैलाने वाले हैं। अल्लाह ताला के एक एक हुक्म पर सर तस्लीम खम करने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा और एक एक सुन्नत पर मर मिटने वाले हैं। उन्होंने कहकर नहीं बल्कि अमल करके भी दिखाया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही वो मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात है जिन्हें दुनिया ही में अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा और खुशनुदी की सनद अता की है। इसी पर बस नहीं बल्कि उनके ईमान व आमाल को सही और दुरुस्त का मयार बनाया है। इसलिए आइए आपको बताते हैं कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के क्या मामूलात हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का मामूल था कि रमज़ान मुबारक के महीने की आमद से पहले ही अपने मामूलात को तरतीब दे दिया करते थे, जिसमें रोज़ा, क़यामुल लैल यानी तहज्जुद व तरावी, तिलावत कुरान करीम और सदका व खैरात होते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन खुश दिली से रोज़ा रखा करते थे, हत्ता कि सफ़र और जंग के दौरान भी रोज़ा रखते थे। गर्मी की तमाज़त भी उनके रोज़े में हायल नहीं होती थी, यानी जितनी भी शदीद गर्मी होती थी
ऐसा नहीं होता था कि वो रोज़ा छोड़ देते थे। हज़रत अबू उस्मान रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा कि आप रोज़ा की हालत में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कपड़ा भिगोकर अपने ऊपर डाल रहे थे। यही वजह है कि उनका रोज़ा कामिल और मुकम्मल होता था। रोज़े के मकासद में वो खरे उतरते थे। वो रोज़े के फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठाते थे। उनकी नमाजें काबिल रश्क होती थीं। तिलावत कुरान मजीद भी दिलों को नर्म और गर्म करने वाली होती थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ हाथ नहीं आता, और बहुत से रातों में नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्हें रात जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने रोज़े का हक अदा नहीं किया हुआ होता। रोज़े का हक ये है कि लायानी बातों से बचा जाए। आँख, नाक, कान, जुबान और दिलो दिमाग को गुनाहों से पाक रखा जाए और उन्हें अल्लाह की याद में मशगूल रखा जाए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो गुनाहों की बात ना किया करे, ना किसी को गाली दे और ना किसी के साथ उलझे। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है कि कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को नसीहत करते हुए कहते हैं, जब तुम रोज़ा रखो तो जितना भी हो सके फजूल बातों से बचो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी ज़ुबान झूठ और गुनाहों से रोज़ा रखें। खादम को तकलीफ देने से बाज रहो और तुम पर वक़ार और सिकनत हो। तुम अपने रोज़े और अपने गैर रोज़े के दिन को यकसा मत बनाओ। यानी कि रोज़े में और आम दिनों में फ़र्क यही है कि उन दिनों में जो ख़ताएँ, जो लग़ज़िशें होती हैं रोज़े के साथ, वो ना। दुनियावी ख़राफ़ात से बचने की खातिर बाज़ सहाबा कराम रोज़े की हालत में मस्जिद ही में रहते थे। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों के बारे में रिवायतों में आता है कि जब रोज़ा रखते तो मस्जिद में ही रहते। रोज़े का पूरा हक अदा करने के अलावा सहाबा कराम रमज़ान में अपने मालों का भी पूरा हक अदा किया करते थे। ज़कात के अलावा सदकात व खैरात की भी कसरत करते थे। गरीब व मस्कीन और अपने दोस्त अहबाब पर दिल खोल कर खर्च करते थे। उनकी दावत किया करते थे। सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करते थे। असहाब सफ़ा जो मुसलमानों में मुआशी लिहाज से कमज़ोर लोग थे और मस्जिद नबवी में बसेरा करते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जब रमज़ान का महीना आया तो हम सफ़ा में थे। हमने रोज़ा रखा। जब अफ्तार का वक्त होता तो एक एक आदमी आता और हम में से किसी एक को अपने साथ ले जाता और रात का खाना भी खिलाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कभी आपके शागिर्द सहरी खाया करते थे। नसर बिन इमरान ज़बई से रिवायत है कि हम रमज़ान में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इफ्तार किया करते थे और खाना भी खाते थे। बात की जाए अगर रात के मामूलात की कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन अपनी रातें कैसे गुजारते थे, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम आम दिनों में तहज्जुद की पाबंदी किया करते थे और रात का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। अलबत्ता रमज़ान में तकरीबन पूरी रात इबादत में सर्फ करते थे। तरावी के बाद नवाफिल में मशगूल हो जाते थे। अपने क़याम में तवील तिलावत किया करते थे। रात का अक्सर हिस्सा तिलावत कुरान, नमाज और ज़िक्र व अज़कार का और इस्तग़फ़ार में गुजारते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हुए सुना, हम रमज़ान में क़यामुल लैल से वापस होते तो खादिमों को जल्दी खाना लाने के लिए कहते थे, कहीं तुलुए फजर ना हो जाए। सहाबा कराम की नमाजों और तरावी का ये हाल था
کہ طویل قیام اور لمبے رکوع و سجود کی وجہ سے جب وہ تھک جاتے تھے تو لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینے کی جو ہے وہ انہیں ضرورت پڑتی تھی. چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے صائب بن یزید سے روایت کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طویل قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عراق بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے رمضان میں صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ طویل قیام کی وجہ سے اپنے لیے رسیاں باندھتے تھے تاکہ اس سے سہارا لیں. تو دوستو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے معمولات رمضان کے. آج ہم ان کے نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی ان کی طرح اپنے معمولات بنانے چاہیے. اپنی زندگی کو ہمیں بھی اسی طرح سے بدلنا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی ہے بلکہ ہر ممکن یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اپنی زندگی میں انہی کی زندگیوں کے عمل جو ہیں ان کو لے کر آنا ہے تاکہ ہم کسی بھی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں. اور ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں موقع ملا ہے, ہمیں موقع میسر آیا ہے کہ ماہ رمضان بھی ہمیں ملا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اس بات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک دیا ہے. اور اس طرح سے کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ ایک بھرپور موقع ہوتا ہے. 29 یا 30 دن کا یہ ایک سیشن ہے جو ہم گزارتے ہیں اور اپنی آنے والی اگلی زندگی کے جو 11 مہینے ہیں اگر ہمارے نصیب میں قسمت میں لکھے ہیں تو ہم نے اپنی عادات کو اسی طرح سے ڈھالنا ہے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوتے ہی ہمارے معاملات پھر سے تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ انہی دنوں میں اپنی زندگی کو اتنا تبدیل کر لیں کہ اپنی زندگی کے آنے والے اگلے مہینے جو ہیں وہ اسی جیسے ہوں. نماز قضا نہ ہو, راتوں کو قیام کریں, تہجد پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, غریب اور مساکین میں جو ہے آپ وہ خیرات اور صدقات دیں اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی جو روش ہے اسے بھی قائم رکھیں. تو یہ وہ طور طریقے ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنا کر انہی کو آگے لے کر چلنا چاہیے. دوستو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں کلام, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سن رہے ہیں CVFM ریڈیو سے خصوصی پروگرام سیرات مستقیم اپنے دوست راؤ قمر رضوان کے ساتھ. شامل کر لیتے ہیں جی اس کلام کو, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جان والے تے باجاوی
ਠੰਡ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਸੰਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੰਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਸਫੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਸਫੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਸਫੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਸਫੀਨੇ ਦੀ ਮਾਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਰਤੇ ਝੋਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਮੁਖ ਜਿਹਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖ ਜਿਹਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਦਿਲ ਰੰਗੀਏ 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 ਮੰਗਦੇਗਾ ਆਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਦਾ ਏ 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 ਸਾਦਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਦਕ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਜਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਜਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਠੰਡ ਪਾਉਣੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ 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 ਨੂੰ जी दोस्तों, जाना शहर मदीने नु, ये खूबसूरत सा कलाम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम अपने मेज़बान राव कमर रिजवान के साथ। दोस्तों, शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक सहाबिया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बुलंद हिम्मती का वाक़या, जो कि ख़ास तौर पर मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारी मेरी बहनें भी हमारा प्रोग्राम सुनती हैं। तो जहाँ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी की बात हुई है तो वहीं पर सहाबियात का भी जिक्र होना चाहिए। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलीलुल क़द्र सहाबियात में से हैं। उनकी दीनदारी और इस्लाम दोस्ती की अजीब व गरीब वाक़यात बयान किए गए हैं।
जिनमें से एक दो वाक़यात ख़वातीन की तालीम व तबलीग के लिए बताए गए हैं। पहला वाक़या उनके निकाह के मुतालिक है। हज़रत उम्मे सुलैम क़बल अज़ निकाह इस्लाम कबूल कर चुकी थी, जबकि हज़रत अबू तलहा हनूज़ हल्का इस्लाम में दाखिल ना हुए थे। उन्होंने हालत कुफ्र में ही उनको शादी का पैगाम दिया। जवाब में उम्मे सुलैम ने कहलवाया कि ए अबू तलहा, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुमने एक ऐसी लड़की को मबूद बना रखा है जिसे फलां कबीले के एक हबशी गुलाम ने खड़ा है? कहने लगे कि मालूम है। उम्मे सुलैम ने कहा कि क्या तुम्हें ऐसी लकड़ी को माबूद बनाते हुए शर्म नहीं आती? तुम जैसे आदमी का पैगाम रद्द तो नहीं किया जा सकता, मगर मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और तुम ताहाल कुफर पर हो। अगर तुम भी इस्लाम कबूल कर लो तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है, मतलब महर यही काफ़ी है मेरे लिए। अबू तलहा कहने लगे कि तुम इस मर्तबा की औरत हो कि उसका ये महर नहीं हो सकता, तो फिर मेरा क्या महर होगा? उम्मे सुलैम ने सवाल किया। तुम्हारा महर सोना चांदी होगा, अबू तलहा ने जवाब दिया। उम्मे सुलैम ने कहा कि मुझे ना सोना पसंद है ना चांदी, बस इस्लाम पसंद है। चुनाचे हज़रत अबू तलहा के दिल में भी इस्लाम की अहमियत पैदा हो गई और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा को आते देखा तो फरमाया, अबू तलहा इस आल में आ रहे हैं कि उनकी आंखों के दरमियान इस्लाम का नूर चमक रहा है। चुनाचे अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उनका हज़रत उम्मे सुलैम से निकाह भी हो गया। और दूसरा जो वाक़या है वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। वो ये है कि एक मर्तबा उनका बेटा बीमार हुआ। अबू तलहा इस दौरान कहीं तशरीफ़ ले गए, चुनाचे उनके शाम को आने से कबल ही साहिबजादे का इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये वाक़या बहुत फेमस है और आपसे मैं पहले बयान भी कर चुका हूँ। तो पहला जो वाक़या था उसमें दीन इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाई गई है कि हज़रत उम्मे सुलैम ने जिस तरह से दीन इस्लाम कबूल कर लिया था शादी से पहले ही, तो अबू तलहा ने जब पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा कि पहले दीन इस्लाम कबूल करना होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी किसी बेटी का या बेटे का रिश्ता करना होता है तो हमारे यहाँ तो दौलत देखी जाती है, मर्तबा देखा जाता है, कारोबार देखा जाता है, ख़ानदान देखा जाता है कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इनकी जायदाद कितनी है, इनके कारोबार कितने हैं। हमारे यहाँ ये देखा जाता है। लेकिन ये सहाबिया जिन्होंने कहा कि मेरे लिए हक महर जो है वो बस यही काफ़ी है कि तुम मुसलमान हो जाओ, हमारे दिलों के अंदर जज्बा ये वाला जब पैदा हो गया ना तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमारे मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, उनके अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए, ये मोहब्बत और उल्फत दीन इस्लाम से पैदा होनी चाहिए। ना तो दुनियावी रख रखाव देखा जाना चाहिए, न दुनियावी दौलत, रुपया, पैसा, माल और दुनियावी इज़्ज़त को देखा जाना चाहिए, किसी मकाम को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अपना कोई भी फ़ैसला जो है, कोई भी रिश्ता और ताल्लुक़ जो है वो दीन इस्लाम को सामने रख कर किया जाए तो आपकी ना सिर्फ इस ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आएंगी बल्कि आपकी आने वाली जो अबदी ज़िंदगी है वो भी संवर जाएगी। हमारे लिए मसाइल तब पैदा होते हैं कि जब हम दीन से दूरी इख्तियार करके इस दुनिया के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर बच्चियां बुढ़ापे में पहुंचकर भी गैर शादीशुदा हैं तो उसकी वजह यही है कि लड़की वालों को भी तो वो लड़का चाहिए होता है कि जो कि अच्छा हो, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, बड़े ख़ानदान से हो, अच्छा कारोबार करता हो या फिर अच्छी जॉब करता हो, गाड़ी हो, बंगला हो। ये प्रॉब्लम। और लड़के वालों को भी तो वो लड़की चाहिए जो ऊंचे कद की हो, खूबसूरत हो, रंगोरा हो, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, जहेज़ में गाड़ी भी लाए। जब हमारा बेटा उनके घर जाए तो उसकी बड़ी इज़्ज़त होनी चाहिए, उसके दोस्तों की भी बड़ी इज़्ज़त होनी चाहिए। और शराइत ये भी होती हैं लड़की वालों की जानिब से कि लड़के वालों की फैमिली छोटी होनी चाहिए और लड़का जो है
वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा भी होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा लड़का हुआ तो बाकी उसके छोटे बहन भाई ज़्यादा हुए तो हमारी बच्ची तो उनकी शादियां करती करती रह जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें अपना आइडियल चाहिए भाई। आइडियल जो है वो दीन इस्लाम की रूह से चुने आप तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर दीन इस्लाम आ गया है ना, कोई मुश्किल उनकी लाइफ में नहीं है। आज हम अगर मुश्किलात का शिकार हैं, वो चाहे माली लिहाज से हों, चाहे रिज़्क़ की तंगी के हवाले से हों, या हमारे आपस के ताल्लुकात की बात की जाए, सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम से दूरी की वजह से है। हम दीन इस्लाम को फॉलो करें। हमारी ख़वातीन बहनें जो हैं वो सहाबियात की ज़िंदगी को पढ़ें, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी पर अमल करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ें, उस पर अमल करें। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ें। इसके अलावा दीगर जितनी भी सहाबियात हैं, चाहे वो उम्महातुल मोमिनीन हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हैं, या दीगर सहाबियात हैं, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी के किस्सों को पढ़ें। और मैं अपने प्रोग्राम में यही कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को शामिल करूँ कि शायद कोई एक वाक़या ऐसा हो कि जो हमारी बहनों की ज़िंदगी बदल दे। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी को भी मैं इसीलिए अपने प्रोग्राम में बार बार डिस्कस करता हूँ। हर साल कोशिश करता हूँ कि हर सहाबी की लाइफ के बारे में अहम वाक़यात जो हैं वो आपसे शेयर किए जाए, और इसका मकसद भी यही होता है। इस साल भी मैंने कोशिश शुरू की है कि इंसाफ की अगर बात की जाए, अदल की बात की जाए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो हमारी भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सो दोस्तों, कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। बाकी आप अपनी राय का इजहार करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ के नंबर 01642688104 पर कॉल करके हमें अपनी मोहब्बतों चाहतों का इजहार कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से भी बात कर सकते हैं। और इस वक्त स्टूडियोज़ की घड़ी मुझे ये बता रही है कि वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अभी चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, इसके बाद लौट कर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। Across Millsborough and Teesside, this is 104.5 CVFM Ramadan Live. Zyka Restaurant and Takeaway, authentic Lahori cuisine, now available in the heart of Middlesbrough. Here at Zyka Restaurant, we specialize in bringing you the cooking flair and the flavors of Punjab to tantalize your taste buds. Whether you're a fan of Desi Nashta, Pai, Nihari, you'll only find the real taste here at Zyka Restaurant. We are open for lunch. Come and try our famous tawa with your family and friends. Our vast menu also includes delicious wraps, burgers, rice dishes and mouth-watering curries. We also cater for weddings, birthdays, khatams and other family and religious functions. For more details, call us on 01642 244 255 or visit our restaurant at 107 Waterloo Road, Middlesbrough. AAA Car Sales Limited, a family-run car dealership based in Darlington. When buying from us, you have the comfort of knowing that every car has to pass a rigorous 72-point check before it is approved for sale. And all of our cars come with 12 months MOT, 12 months free breakdown cover and up to 6 months AA warranty. At our showroom, we have a selection of up to 70 cars from £4,000 to £20,000, so it's easy to find the right car for you. We offer quick and fast finance to allow you to purchase the car of your dreams. Our special offer during Ramadan means that you'll currently get £500 off the marked price of every vehicle when you quote the promotion code Ramadan. Visit our showroom now at 396 Westall Road, Darlington, before you miss out on this amazing deal. We also buy vehicles for cash, so call Abby today on 077 199 65318 to get the best valuation of your car, or visit us at www.aaa-carsales.co.uk. AAA Car Sales Limited, the name you can trust for quality used cars. Terms and conditions apply. Are you planning a nikah, mehndi, wedding or any other special event? Then make it lavish with the help of Lavish Occasions.
Here at Lavish Occasions, we specialise in creating spectacular Asian weddings, and we pride ourselves on giving your function the wow factor. Our service includes bespoke floral decor for central stage, walkway, table arrangements and much more. For more information, contact our event consultant on 078 37 360 504 or email lavish.occasions@outlook.com. Search by Lavish Occasions Middlesbrough on social media and follow us for inspiration and ideas. Lavish Occasions, luxury bespoke services, providing quality decor for all occasions. Burgerlicious, the unmistakable taste of flame grilled burgers right here in Middlesbrough. Burgerlicious offers tasty, affordable, made-to-order food sourced in the UK using local suppliers. We specialise in smash burgers, not just any burgers, but Angus, prime beef fillet, matured for days, as well as tasty chicken and fish burgers with options for vegans and vegetarians too. So why not get the real taste of mouth-watering food in a relaxed burger bar in the heart of Middlesbrough? It's not just delicious, it's Burgerlicious, and it's open 7 days a week at 242 Linthorpe Road, Middlesbrough. Call us on 01642 051 315 or visit www.theburgerlicious.co.uk to see our menu and place an order. Also, why not complete your dining experience with a visit to Chailicious, specialising in authentic Karak and Kashmiri chai teas and hot and cold desserts. Burgerlicious, home to the #1 smash burger specialist in the Northeast. Ali 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 Mola Ali. Ali's Superstore, probably the largest Asian superstore in the Northeast, now open with amazing Ramadan offers. अली सुपर स्टोर लेके आ रहा है आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया, फल, सब्जियां, हलाल गोश्त, चिकन, तमाम मसाला जात और बहुत कुछ नहायत मुनासिब और कम कीमत में। अली सुपर स्टोर सच में सस्ता। Ali's Superstore, where quality counts. Visit us today to pick up your Ramadan shopping. Located at 436 Linthorpe Road, Linthorpe Village, Middlesbrough, with ample free parking. Use our call and collect service by telephoning us on 01642 134 866. That's 134 866. Ali Superstore, the name you can trust. The station that lives and loves Ramadan, this is 104.5 CVFM Ramadan Live. बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना बेखुद किए देते हैं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना आतिश में तुझे रख लूं आतिश में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना बेखुद किए दे
देते हैं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। आ दिल में तुझे रख लूं, रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है। अजमेर का साक़ी हो, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैखाना। आ दिल में तुझे रख लूं, रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। छूटा है ना छूटेगा, ना 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 छूटा है ना छूटेगा। संगे दर जाना ना। आ दिल में तुझे रख लूं, रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही जाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं, रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही जाबाना बेखुद किए देते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। वापस आ चुके हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसे कहते हैं सिरात मुस्तकीम, और मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त राव कमर रिजवान आपके साथ। दोस्तों, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में है। कल हमने बात की थी जहाँ तक सहरी में ख़ुसूसी रायत के हवाले से, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें फिर ये नेमत अता की कि हम रात के वक्त में जो है वो जायज़ कामों को कर सकते हैं, यानी कि
افطاری سے لے کے صبح سحری تک ہمارے لیے کئی ایسی چیزیں جو کہ پہلے نہیں جائز تھیں پھر انہیں جائز قرار دیا گیا. اس کے بعد ایک منافق کی گردن اڑانے کا واقعہ ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا. یہودی نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں. منافق نے خیال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق فیصلہ کریں گے، کبھی کسی کی طرفداری اور رعایت نہ فرمائیں گے جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے گا. اس لیے اس نے مدعی ایمان ہونے کے باوجود کہا کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو جو ہے وہ پانچ بنائیں گے. یہودی جس کا معاملہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے اور جو رشوت خور ہوتا ہے اس سے صحیح فیصلے کی امید رکھنا غلط ہے. اس لیے کعب کے ہم مذہب ہونے کے باوجود یہودی نے اس کو جو ہے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو منافق کو فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مجبوراً آنا پڑا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق فیصلہ کیا وہ اتفاق سے یہودی کے موافق اور منافق کے مخالف ہوا. منافق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد پھر یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا. یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرما چکے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو، میں ابھی آ کر فیصلہ کیے دیتا ہوں. یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق مدعی ایمان کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا پنچ شیطان کو بنائیں، اور اس کو تو یہ حکم تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. پھر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کو قتل کر دیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں فیصلے کے لیے حاضر ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر سے ایسی امید نہیں کہ وہ کسی مومن کو جو ہے وہ قتل پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں. ان واقعات سے بارگاہ اللہ رب العزت عز و جل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی باتوں کے موافق وحی الہی اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں. روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ علامہ واقدی کی روایت کے مطابق یوں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علالت کے سبب بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان سے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جتنا کہ آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ تو بتلاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا کوئی مثل نہیں، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جیسے یہ ہے. پھر آپ نے حضرت سعید بن زید، حضرت اسید بن حضیر اور دیگر انصار و مہاجرین رضوان اللہ اجمعین حضرات سے بھی مشورہ کیا اور ان کی رائے معلوم کی.
हज़रत असयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल खूब जानता है कि आपके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल है। वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और अल्लाह ताला जिससे नाखुश होता है उससे भी वो नाखुश रहते हैं, और उनका बातिन उनके ज़ाहिर से भी अच्छा है, और कार खिलाफत के लिए इनसे ज़्यादा मुस्तैद और कवि शख्स कोई नज़र नहीं आता। फिर कुछ और सहाबा कराम रिज़वान अल्लाहुम अजमाइन आए। उनमें से किसी एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्त मिजाजी से आप वाकिफ़ हैं, इसके बावजूद अगर आप उनको खलीफा मुकर्रर करेंगे तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने मुझको खौफज़दा कर दिया, मगर मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ करूंगा कि या इलाही रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे बंदों में से बेहतरीन शख्स को खलीफा बनाया है, और ए एतराज़ करने वाले, ये जो कुछ मैंने कहा है तुम दूसरे लोगों को भी पहुंचा देना। इसके बाद आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, लिखिए, ये वसीयतनामा है जो अबू बकर बिन अबू कहाफा ने अपने आखिरी ज़माने में दुनिया से रुखसत होते वक्त और अहद खिलाफत के शुरू में आलम बाला में दाखिल होते वक्त लिखा है। ये वो वक्त है जब कि एक काफिर भी ईमान ले आता है, एक फासिक व फाजिर भी यकीन की रोशनी हासिल कर लेता है, और एक झूठा भी सच बोलता है। मुसलमानों, अपने बाद मैंने तुम्हारे ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुंतखब किया है। उनके अहकाम को सुनना और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करना। मैंने हत्तुल इम्कान अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन और अपने नफ्स के बारे में कोई गलती नहीं की है, और जहाँ तक हो सका तुम्हारे साथ भलाई की है। मुझे यकीन है कि वो यानी हज़रत उमर अदल व इंसाफ से काम लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरे ख्याल के मुताबिक होगा, और अगर उन्होंने अदल व इंसाफ को छोड़ दिया और बदल गए तो हर शख्स अपने किए का जवाबदेह होगा। और ए मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए नेकी और भलाई ही का कसद किया है। सूरह शौरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जालिम अनकरीब जानेंगे कि वो किस करवट पर पलटा खाएंगे। ये उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई। फिर आपने इस वसीयतनामे को सरबा मोहर करने का हुक्म दिया। जब वो मोहर बंद हो गया तो आपने उसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया, जिसे लेकर वो गए। लोगों ने राजी खुशी से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते हक परस्त पर बैत की। इसके बाद आपने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तन्हाई में बुलाकर कुछ वसीयतें फरमाईं, और जब वो चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज़ किया, या इलाहुल आलमीन, ये जो कुछ मैंने किया है इससे मेरी नीयत मुसलमानों की फलाह व बहबूद है। तो इस बात से खूब वाकिफ़ है कि मैंने फितना व फसाद को रोकने के लिए ऐसा काम किया है। मैंने इसके बारे में अपनी राय के इज्तिहाद से काम लिया है। मुसलमानों में जो सबसे बेहतर है मैंने उसको उनका वाली बनाया है, और वो इनमें सबसे कवी और नेकी पर हरीस है। और या इलाहुल आलमीन, मैं तेरे हुक्म से तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ। या अल्लाह, तू ही अपने बंदों का मालिक व मुख्तार है, और उनकी बागडोर तेरे ही दस्ते कुदरत में है। या इलाहुल आलमीन, इन लोगों में दुरुस्तगी और सलाहियत पैदा करना, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुलफाए राशिदीन में से करना, और उनके साथ उनकी रैयत को अच्छी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दोस्तों, राफजी लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपनी ज़िंदगी में खलीफा मुंतखब किया तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, इसलिए कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में किसी को खलीफा नहीं बनाया। हालांकि वो अच्छाई और बुराई को खूब जानते थे और अपनी उम्मत पर पूरी तरह शफ़क़त और राफ़त रखते थे, मगर इसके बावजूद आपने उम्मत पर किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी ज़िंदगी में खलीफा नामज़द कर दिया, जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
खुली हुई मुखालफत है। इस एतराज़ के 3 जवाब हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं। पहला जवाब यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में उम्मत पर खलीफा ना बनाना खुला हुआ झूठ और बहतान है, इसलिए कि सब के सब इस बात के कायल हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को खलीफा बनाया था। लिहाजा अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सुन्नत नबी की पैरवी में खलीफा मुंतखब कर दिया तो इसमें मुखालफत कहाँ से लाजिम आ गई। तो दोस्तों ये कुछ इख्तलाफ की बातें हैं, खैर हम इनको पीछे छोड़ देते हैं। वैसे तो दिल तो चाहता है कि तमाम हक़ाइक़ को खुलकर बयान किया जाए, लेकिन चूँकि हमारे तमाम दोस्त भाई हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं तो इसलिए हम कुछ बातों को ज़रा पीछे छोड़ देते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर बात कर लेते हैं ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बाद खलीफा बनाकर निहायत अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लिया, इसलिए कि वो जानते थे इस्लाम अपनी खूबियों की बिना पर रोज़ बरोज़ फैलता ही जाएगा। बड़ी बड़ी सल्तनतें ज़ेर नगी होंगी और बड़े बड़े ममालिक फतह होंगे, जहाँ से बहुत माल गनीमत आएगा, लोग खुशहाल और मालदार हो जाएंगे। और मालदारी के बाद अक्सर दुनियादारी आ जाती है, दीनदारी कम हो जाती है। इसलिए अब मेरे बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्स को खलीफा होना ज़रूरी है, जो दीन के मामले में बहुत सख्त हैं और शरीयत के मामले में किसी की परवाह नहीं करते हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने यह ख्याल किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा खिलाफत के मुस्तहिक और हकदार हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, तो उसने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खताकार ठहराने के साथ तमाम अंसार मुहाजिरीन को भी खताकार ठहराया। तो इन बातों को जहन में रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जी हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको भरपूर तरीके से पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम आप सुन रहे थे CVFM रेडियो रमज़ान के स्टूडियो से। मैं था आपका अपना मेज़बान राव कमर रिजवान आपके साथ। आज के प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक था। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ख़ुद को तकलीफ़ दे के भी अपने पेरेंट्स की केयर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते आपके लिए एक कलाम प्ले किए देता हूँ और आखिर में होगी कमर्शियल ब्रेक। सो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। और जाते जाते दोस्तों जो कलाम मैं आप लोगों के लिए प्ले किए जा रहा हूँ ये है हिना नसरुल्लाह की आवाज़ में। मिलते हैं कल फिर। अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन मेरे कमली वाले की शान निराली है। मेरे कमली वाले की शान निराली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की
जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है सल्ले अला नबीना सल्ले अला चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है चाँद की तरह उनको हम कहें तो चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है क्योंकि उनकी चौखट पर चाँद भी सवाली है क्योंकि उनकी चौखट पर चाँद भी सवाली है दो जहां के दाता हैं सारा जग सवाली है Live from the heart of Middlesbrough, this is CVFM Ramadan Live. Live from the heart of Middlesbrough, this is CVFM Ramadan Live. फास्ट फूड की दुनिया में एक बेहतरीन नाम Clucky's Fried Chicken. जहां आपको मिलेगा लजीज फ्राइड चिकन पिज्जा रैप्स और बर्गर्स Whether you want amazing tasting boneless chicken strips, combo meals or supreme burgers, we've got something that will satisfy your taste bud. Clucky's Fried Chicken 295 Linthorpe Road Middlesbrough Clucky's is open 7 days a week with delivery available from 3 p.m. till 2 a.m. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642230900 Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो क्लकीज में है Issues with impotence? Tried everything, but nothing works? Would you like to see if a new treatment can help? MAC Clinical Research is looking for men aged 18 to 59 living with erectile dysfunction to participate in a clinical trial. If eligible, you may receive up to £690 plus travel expense. For more information, call UK free phone 0800 121 6397 or visit researchforyou.co.uk. Mist Lounge, Middlesbrough's premium food and dessert lounge. Come and enjoy the finest selection of sumptuous desserts and our famous mixed grill in a relaxing atmosphere with your family and friends. We also have pool and snooker tables available for hire for your enjoyment. If you're a sports fan, then we have a treat for you too. We readily showcase live sports events from around the globe, providing an atmospheric environment for your viewing pleasure. Mist Lounge, located at 339 Linthorpe Road, Middlesbrough, 01642 82 20 20. Follow us on social media for regular updates and offers. Search Mist Lounge Middlesbrough. Mist Lounge. Food, desserts, pool, snooker, live sports, all under one roof. अहमद फूड स्टोर 40 साल से भी ज्यादा टी साइड को सर्व करते हुए यहाँ आपको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल से लेकर सभी तरह के स्पाइसेस और हलाल मीट और रोजाना यूज होने वाली सभी चीजें मिलेंगी। तो जी हाँ, डिले ना करें और आज ही रमजान ऑफर्स का फायदा उठाएं। मियां मुश्ताक ब्रदर्स की पेशकश, मुश्ताक ब्रदर्स की पहचान और स्टॉकटन की शान। Ahmed Food, 6 North Court Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे।
अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल, जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स 131 पार्क लेन, मिडलsbrough, टेलीफोन 01642 688 786. Manjaro's, the home of fusion food, blending African and Caribbean flavors to offer mouth-watering array of dishes. मनचाहा खाना और लजीज खानों की आला वैरायटी सिर्फ मंजारोस पर। This Ramadan, make Manjaro's your go-to iftar option. We have all your favorites, whether it's Waka Waka chicken, Rasta pasta, Manjaro's Pamo, Supreme chicken, or the delicious lamb chops. Call and collect from our restaurant. Telephone Middlesbrough 60 50 60 or check out manjaros.co.uk. मेरी, आपकी, हम सबकी पसंद मंजारोस। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ही मेरी मंजिल है। हर किसी की मंजिल वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर ही तो है। वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर, जहां पर आपको मिलेगा ताज़ा गोश्त, चिकन, फल और सब्जियां, तमाम मसाला जात, आला वैरायटी बेकरी का सामान। इसके अलावा किचन के तमाम बर्तन भी दस्तयाब हैं। इस रमजान आएं और हमारी स्पेशल ऑफर्स का भरपूर फायदा उठाएं। आपके मुंतजिर वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर। Within Continental Store, 26 to 30 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642649400. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. On 104.5 FM, online, via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਟੇਕਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਫੋਰਚੂਨ ਕੁਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰੌਨ ਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵਿਦ ਚਿਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ Fortune Cookie Express, Middlesbrough. Authentic Chinese cuisine and 100% halal. And remember to check out our sweet menu, offering milkshakes, delightful cakes, desserts, and your favorite ice cream and cookie dough. ਕਮਾਓ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਲਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ Fortune Cookie Express, 189 to 191 Linthorpe Road, Middlesbrough. Telephone 01642 232332 or visit www.fcexpress.com for your online orders. أهلا أهلا رمضان 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 Assalamu alaikum, it's Sami here. I just want to wish everyone a happy Ramadan. Hi, I'm Bridget and I want to say a happy Ramadan to all the listeners. Hello, my name is Bassett. I want to say a happy Ramadan to all Muslims around the world. Hi, my name is Mia. Happy Ramadan, everyone. Assalamu alaikum. My name is Ahmed. I want to say a happy Ramadan Mubarak to all of you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Huria. Ramadan Mubarak to all the listeners. للجنات مفاتيح أهلا أهلا رمضان 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 Assalamu alaikum. This is Idris here from the CVFM Ramadan Live team. I just want to take this opportunity to wish all our listeners and viewers on social media a very, very happy Ramadan. Hope you guys have a blessed month and do stay tuned. You're listening to CVFM Ramadan Live. .5 CVFM. नियामतें बढ़ती हैं,
خوشیاں دکھتی ہیں، برسات ہے رحمتوں کی، سعادتوں کی، برکتوں کی، تازہ ہو جاتا ہے ایمان، یہی ہے رونق رمضان۔ آپ سن رہے ہیں CVFM ریڈیو کی خصوصی رمضان نشریات 104.5 FM پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سنتا ہے تو ہے قریب، سب کا محافظ ایک تو، سب کا فقط تو ہی الہ۔ سوى تجلى في علا بالأرض قد نصب الجبال قد زادها زهر الجمال الماء من قد أنزل الله جل وعلا جس نے بنایا یہ جہاں تیرے زمین پر ہے، پہاڑ ان سے جھلکتی تیری شاہ بارش کا خالق کون ہے؟ تو ہی تو ہے میرے الہ۔ الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سواه، ذاك العظيم في علا من أبدع الكون
برساتا ہے بارش کس نے دی نہریں ہمیں کھیت ہیں کس نے اگائے کس نے دی رونق انہیں کون برساتا ہے بارش کس نے دی نہریں ہمیں کھیت ہیں کس نے اگائے کس نے دی رونق انہیں سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ 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 یا شلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى الله کس نے چڑیوں کو سکھایا کہ فضا میں اڑ سکے کس نے دی دنیا میں ہم کو ہر طرح کی نعمتیں کس نے چڑیوں کو سکھایا کہ فضا میں اڑ سکے کس نے دی دنیا میں ہم کو ہر طرح کی نعمتیں سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ 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 یا وأبدع الجمال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى الله کس نے ہمیں اور کان ہے کس کی عطا کس نے انسان کو سکھایا حسن ہے کس کی عطا دی زبان کس نے ہمیں اور کان ہے کس کی عطا کس نے انسان کو سکھایا حسن ہے کس کی عطا سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے
सिवा सबका रब सबसे बड़ा कोई नहीं तेरे सिवा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह या CVFM Ramadan Live in association with Clucky's Fried Chicken, where you get the real food, real taste, real fast. كلما ناديت يا قال يا عبدي يا الله. Join in with the Allahs inshallah. كلما ناديت يا قال يا عبدي يا الله. Everyone. Allah. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. 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 في ربيعنا أطلع الله وأتى النصر من الله. في ربيعنا أطلع الله وأتى النصر من الله. يا له شهر عظيم وشريف كرم الله. يا له شهر عظيم وشريف كرم الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. الله ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. تكبير. की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं.
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना बिन नूरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलातु वत्तलब सिफातु या बख्तल इफ्तहलु माशी अशफाल मामातु उम्मतें और भी हैं उनमें गुनाहगार भी हैं इज्ज वाले भी हैं मस्त मैं पिंदार भी हैं इनमें काहिल भी हैं गाफिल भी हैं होशियार भी हैं सैकड़ों हैं जो तेरे नाम से बेजार भी हैं रहमतें हैं तेरी अगियार के गाशानों पर बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं शिकवा 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 हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर कहीं मसजूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर खूगरे पै करे महसूस थी इंसान की नजर मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर तुझको मालूम है लिखा था कोई नाम तेरा कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा मोहम्मद नबीना ये जहां चीज है क्या बिन नूरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना कि मोहम्मद से वफा CVFM Ramadan Live in association with Clucky's Fried Chicken, where you get the real food, real taste, real fast. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल-मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल-मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूँ। कोई नहीं जी, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। Al-Makkah Halal Meat and Cash and Carry, 303 to 307 Linthorpe Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487.
Are you planning a nikah, mehndi, wedding or any other special event? Then make it lavish with the help of Lavish Occasions. Here at Lavish Occasions, we specialise in creating spectacular Asian weddings, and we pride ourselves on giving your function the wow factor. Our service includes bespoke floral decor for centre stage, walkway, table arrangements and much more. For more information, contact our event consultant on 078 37 360 504 or email lavish.occasions@outlook.com. Search by Lavish Occasions Middlesbrough on social media and follow us for inspiration and ideas. Lavish Occasions, luxury bespoke services, providing quality decor for all occasions. Mist Lounge, Middlesbrough's premium food and dessert lounge. Come and enjoy the finest selection of sumptuous desserts and our famous mixed grill in a relaxing atmosphere with your family and friends. We also have pool and snooker tables available for hire for your enjoyment. If you're a sports fan, then we have a treat for you too. We readily showcase live sports events from around the globe, providing an atmospheric environment for your viewing pleasure. Mist Lounge, located at 339 Linthorpe Road, Middlesbrough, 01642 82 20 20. Follow us on social media for regular updates and offers. Search Mist Lounge Middlesbrough. Mist Lounge. Food, desserts, pool, snooker, live sports, all under one roof. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. AAA Car Sales Limited, a family-run car dealership based in Darlington. When buying from us, you have the comfort of knowing that every car has to pass a rigorous 72-point check before it is approved for sale. And all of our cars come with 12 months MOT, 12 months free breakdown cover, and up to 6 months AA warranty. At our showroom, we have a selection of up to 70 cars from £4,000 to £20,000, so it's easy to find the right car for you. We offer quick and fast finance to allow you to purchase the car of your dreams. Our special offer during Ramadan means that you'll currently get £500 off the marked price of every vehicle when you quote the promotion code Ramadan. Visit our showroom now at 396 Westall Road, Darlington, before you miss out on this amazing deal. We also buy vehicles for cash, so call Abby today on 077 199 65318 to get the best valuation of your car, or visit us at www.aaa-carsales.co.uk. AAA Car Sales Limited, the name you can trust for quality used cars. Terms and conditions apply. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business, we can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint, Unit 2, Victoria Street, Middlesbrough, just opposite Lidl. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਨੱਚਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਟੇਕਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਫੋਰਚੂਨ ਕੁਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰੌਨ ਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵਿਦ ਚਿਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ Fortune Cookie Express, Middlesbrough. Authentic Chinese cuisine and 100% halal. And remember to check out our sweet menu, offering milkshakes, delightful cakes, desserts, and your favorite ice cream and cookie dough. ਕਮਾਓ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਲਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ Fortune Cookie Express, 189 to 191 Linthorpe Road, Middlesbrough. Telephone 01642 232332 or visit www.fcexpress.com for your online orders. CVFM Ramadan Live in association with Kashmir Food Store, your food specialists. सुन फरियाद पीरां दिया पीरां
सुनी कन धर के बेड़ा अड़िया विच कपूरां दे जिथे बैंदे मच्छी भी ना डर के मेरी लवी खबर झट करके From New York, this is Democracy Now! It's very hard. They said they had already shot him, that I was a widow and I was next. Расстреляли, мне сказали, что я вдова, уже ты следующая. I was already preparing myself to go out to the orchard next and get shot. As many Ukrainians say they've been brutalized by Russian soldiers during the war, and videos have emerged showing dead bodies lying in the street in Bucha, Ukrainian President Volodymyr Zelensky is blasting the United Nations for failing to take action to end Russia's invasion and prevent the atrocities. We'll go to Ukraine to speak with Washington Post video reporter John Gerberg and hear from the people he interviewed. Then to Afghanistan, where the Taliban has shut down public high schools for girls. It was like a day of mourning, a very sad day. It was like losing a loved one. Everyone was crying. The girls were hugging and crying and saying goodbye. This comes as aid groups demand U.S. and European leaders release frozen reserves from Afghanistan's central bank to avoid a total economic collapse. We'll get an update from Afghan-American women's rights advocate Masouda Sultan and Code Pink's Medea Benjamin. They've just returned from visiting Afghanistan. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the United Nations Security Council Tuesday and blasted the UN for failing to take action to end Russia's invasion. He accused Russian forces of executions, torture and rape, including in the city of Bucha, where videos have emerged showing dead bodies lying in the street. На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території моєї держави. Due to the Russian actions on the territory of my country, on Ukrainian territory, the most terrible war crimes since World War II are committed. The killings in Bucha have led to new calls for sanctions. On Tuesday, the European Union proposed banning coal imports from Russia. Meanwhile, Russia is continuing to deny it killed civilians in Bucha. On Tuesday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov accused Ukraine and its allies of spreading propaganda about what happened there. In recent days, the propaganda machine of the West and Ukraine has been working purely to fuel the hysteria over the video that was filmed, as we understand, by the Ukrainian military, by the security service in the town of Bucha in Kiev region. We are inclined to think that the reason is the intention to derail negotiations with Ukraine. Moreover, to do it at the moment when it began to gleam, even if it was not too bright yet.
The Russian Defense Ministry has claimed the killings in Bucha occurred after Russian troops withdrew from the region March 30th, but multiple news outlets report satellite imagery shows bodies lying in the streets of Bucha before the Russian troops left. Meanwhile, Ukrainian officials say another massacre occurred in the town of Bordyanka outside the capital Kyiv. Local officials fear as many as 200 people have died. On Tuesday, NATO Secretary General Jens Stoltenberg warned the war in Ukraine's entering a new phase. In the coming weeks, we expect a further Russian push in the eastern and southern Ukraine to try to take the entire Donbass and to create a land bridge to occupied Crimea. So this is a crucial phase of the war. The Biden administration pledged an additional $100 million in military aid to Ukraine for the purchase of Javelin anti-tank missiles. Since the invasion began, the U.S. has approved at least $1.7 billion in military aid for Ukraine. General Mark Milley, the chair of the Joint Chiefs of Staff, told lawmakers Tuesday he expects the fighting in Ukraine to continue for years. But I do think this is a very protracted conflict, and I think it's at least measured in years. I don't know about decade, but at least years for sure. This is a very extended conflict that Russia has initiated, and I think that NATO, the United States, Ukraine, and all of the allies and partners that are supporting Ukraine are going to be involved in this for quite some time. A coalition of aid groups are warning West Africa is facing its worst food crisis in a decade, due in part to drought, floods, fighting, and the war in Ukraine. 27 million people in West Africa now need food assistance, 4 times the number in 2015. The groups warn the number could jump to 38 million in June if urgent action is not taken. Human Rights Watch is reporting that Malian armed forces summarily executed 300 detained men last week in what the group describes as the worst single atrocity reported in Mali's decade-long armed conflict targeting Islamist groups. Human Rights Watch reports at least 100 Russian troops or mercenaries took part in the operation. Human Rights Watch's West Africa director, Corinne Dufka, said, quote, "Abuses by armed Islamist groups is no justification at all for the military's deliberate slaughter of people in custody." In the United States, lawmakers in Oklahoma have passed a near-total ban on abortion. The bill makes performing an abortion a felony, punishable by up to 10 years in prison and a $100,000 fine. Reproductive rights advocates say the Oklahoma bill is one of the most sweeping abortion bans because there's no exception for rape or incest, and the ban starts at conception. This is Tamia Cox-Touré, the executive director of the American Civil Liberties Union of Oklahoma. So what we do know right now is that this bill has no exceptions and would essentially potentially end abortion access in Oklahoma. And what we also know is that for so many reasons, people will have to travel to out of the state to get the care that they need. And we know this because when Texas lost its abortion access, patients traveled to Oklahoma, and providers were seeing more Texas patients than they've ever seen before. So this will just continue kind of that domino effect of now Texas and Oklahoma patients going to other states to get care. In other news about reproductive rights, Colorado Governor Jared Polis has signed into law the Reproductive Health Equity Act. The law codifies the right to abortion in Colorado and bans local governments from imposing any restrictions on abortions. Barack Obama returned to the White House Tuesday for the first time since leaving office 5 years ago. Obama reunited with Joe Biden to mark the 12th anniversary of the 2010 Affordable Care Act, often known as Obamacare. It's prevented insurance companies from denying people coverage based on a pre-existing condition. It's lowered prescription drug costs for 12 million seniors. It's allowed young people to stay on their parents' plan until they're 26. It's eliminated lifetime limits on benefits that often put people in a jam. So we are incredibly proud of that work. While Biden and Obama hailed the success of Obamacare, there are still 31 million uninsured Americans.
In other health news, Republican lawmakers are vowing to reject a new $10 billion COVID-19 aid deal if Democrats block a vote to reinstate Title 42. Last week, the White House announced it's soon ending the Trump-era rule, which has been used to block over 1.5 million people from seeking asylum at the U.S.-Mexico border. The COVID-19 aid package has also been criticized by many public health advocates, in part because it strips out funding for global efforts to fight COVID-19. A coalition of aid groups criticized the proposal, saying, quote, if passed, this package would send the signal that Congress has not only turned its back on the rest of the world, but at risk the safety and security of the American people and contributed to prolonging the pandemic, unquote. The Biden administration's extending a pandemic pause on federal student loan repayments through August 31st after the relief was due to expire in May. News of the latest extension came less than 24 hours after hundreds of protesters in Washington, D.C. led a march to the Education Department for a National Day of Action Monday, demanding the Biden administration cancel all student debt and calling for a May Day student debt strike if payments resume. The House committee investigating the January 6th insurrection interviewed Donald Trump's daughter, former White House advisor Ivanka Trump, for about 8 hours Tuesday. Ivanka's husband, Jared Kushner, testified last week. Both appeared before the committee voluntarily. In news from Asia, the U.S. State Department's approved $95 million in additional military aid to Taiwan for its Patriot missile defense system. This comes as the United States, Australia, and the United Kingdom announced plans to work together to develop hypersonic missiles in an effort to counter China's military. The U.S. has also acknowledged it tested a hypersonic weapon in mid-March, just days after Russia fired one of its own hypersonic missiles in Ukraine. In Peru, protests are continuing in the capital Lima as anger mounts over the rising prices of fuel, food and fertilizer. On Sunday, the Peruvian government announced it would temporarily scrap a fuel tax to try to stabilize prices. The Peruvian president, Pedro Castillo, faced widespread criticism from human rights groups after he imposed a near 24-hour curfew in Lima and the port city of Callao in response to the nationwide demonstrations. Hundreds of protesters defied the lockdown, forcing Castillo to lift the curfew early. On Tuesday, police assaulted protesters with tear gas. Meanwhile, at least 4 protesters have died in clashes with the police this past week, according to Peruvian government officials. In labor news, workers at a high-end Starbucks in the Chelsea neighborhood of Manhattan have voted to become the first Starbucks to unionize in New York City and the 10th store nationwide. During a recent town hall, Starbucks billionaire CEO Howard Schultz spoke out against the unionization drives. We can't ignore what is happening in the country as it relates to companies throughout the country being assaulted in many ways by the threat of unionization. Earlier this week, Senator Bernie Sanders referenced Starbucks CEO Howard Schultz during a speech on the floor of the Senate. What these recent union victories tell me is that working people all over this country are sick and tired of being exploited by corporations who today are making record-breaking profits. They are sick and tired of billionaires like Jeff Bezos and Howard Schultz, the founder of Starbucks, becoming obscenely richer during the pandemic, while they, the workers, put their lives on the line working for inadequate wages, inadequate benefits, and unfair working conditions and schedules. Peggy Bellecourt has died at the age of 78. In 1968, she co-founded AIM, the American Indian Movement, with her husband, Clyde Bellecourt, and others. Peggy Bellecourt was born in 1944 to an Ojibwe mother and a Japanese-American father. Her parents separated after Peggy's birth to prevent her from being sent to a U.S. internment camp during World War II.
And in Gaza, a 19-month-old baby named Fatima al-Masri has died after waiting for 5 months for Israeli authorities to give her approval to leave Gaza for medical treatment. Fatima was diagnosed last year with a hole in her heart. Her family had booked medical appointments for her in Jerusalem in December and February, but she was forced to miss both because her family's request to leave Gaza was, quote, under review. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. When we come back, as Ukrainians say they've been brutalized by Russian soldiers, Ukrainian President Zelensky's blasting the UN for failing to take action. We'll go to Ukraine to speak with Washington Post video reporter John Gerberg and hear from the people he interviewed. Stay with us. Of Art by the Cinematic Orchestra. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman in New York, joined by Democracy Now! Co-host Juan Gonzalez. Hi, Juan. Hi, Amy, and welcome to all of our listeners and viewers across the country and around the world. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is blasting the United Nations for failing to take action to end Russia's invasion and prevent Russian atrocities. In an address to the United Nations Security Council Tuesday, he accused Russian forces of executions, torture and rape in the city of Bucha, where videos have emerged showing dead bodies lying in the streets. На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території моєї держави. Due to the Russian actions on the territory of my country, on Ukrainian territory, the most terrible war crimes since World War II are committed. Meanwhile, Russia's continuing to deny it killed civilians in Bucha. On Tuesday, the Russian Foreign Minister, Sergei Lavrov, accused Ukraine and its allies of spreading propaganda about what happened in Bucha in order to derail negotiations to end the war. This comes as Ukrainian officials say another massacre occurred in the town of Borodyanka outside Kyiv, where local officials say as many as 200 have died. For an update on what's happening on the ground in Ukraine, we'll be joined in a minute by Washington Post video journalist John Gerberg, who's now in Rivne and has been filing video reports from the war for the past 6 weeks from across Ukraine. We begin with his newest video, published Tuesday, in which a Ukrainian family in Lukashivka, a village near Chernihiv, describes how they were brutalized by Russian soldiers during a 3-week occupation. This is Igor and his wife Yulia and their son, also named Igor. We meet Yulia first. A warning to our listeners and viewers, this video contains descriptions of violent acts. This is our cellar. I went down to the cellar at the very beginning because I was scared. The Russians entered, and we were like that for 3 weeks. I was scared all the time, of the Russian troops, of everything. The kids weren't afraid. The kids would run around. We have 3 kids, and there's my wife and I. We have a nice fortified cellar. The reason the Russians thought I was a military man is because it's all really well built. They wouldn't believe I was just her husband. They thought I was a soldier in disguise. Что я наводчик. Ну, корректировщик или наводчик, как это правильно говорить.
It was standard procedure. They hit you in the ribs with a rifle butt and all that. They would threaten to chop my arms off. Tell us what, where, and how. Put your arms down here. They would take an axe and chop, almost getting my fingers. They'd give me a grenade and tell me to go down to where the kids were. They'd tear off the grenade ring and tell me to go to the cellar. They brought me out 4 times in order to shoot me, but failed. They were too drunk. Our disabled child here, he will tell you, he crawled out of the cellar to defend us so that we wouldn't get shot. They brought Dad outside. They started manipulating him, saying to him, either you tell us what you are doing, or we will shoot you down right here. Your wife will be a widow, and your kids will have no father. So I crawled out and told them, don't touch my dad. Dad is everything to me. Go for a walk. Go. I don't want you to hear this. I don't want anyone to hear this. It's very hard. They said they had already shot him, that I was a widow and I was next. I was already preparing myself to go out to the orchard next and get shot. The Russians wouldn't believe I was his wife and the kid's mother. They thought I was a prostitute. I don't know. A soldier said, "Do you know how to give a blowjob?" Thank God they didn't touch me. I simply pretended to have gone mad. It's very hard. It was very hard to live through all of this. That's a Washington Post video interview published yesterday, with a Ukrainian family who endured a 3-week occupation by Russian soldiers in Lukashivka, a village near Chernihiv. For more, we go to Rivne, Ukraine, to speak with John Gerberg, the video journalist with the Washington Post who filed that report, who's been in Ukraine for more than a month now. John, it's great to have you with us. And just to let people know, we worked with John years ago at Democracy Now! That is a powerful report, and we're going to play more of those. Describe more what you've found as you've traveled, and particularly start by talking about this family. Absolutely. Hi, Amy. Hi, Juan. It's great to be with you guys. This is just one of, unfortunately, far too many examples of the absolute atrocity and devastation that has been wrought on so many Ukrainian families across the country at this point. What we're finding now is that as the Russian forces are moving out of certain areas around key cities in Ukraine, we are pulling back the veil of some of the more active conflict that was keeping us as journalists from some of these areas. And the level of violence, I mean, you heard it there in the video, that, we're talking torture, mock executions, threats of rape. This particular village, Lukashivka, is outside of the city of Chernihiv, which made headlines early on for getting heavily shelled by the Russians, and the Russians were besieging that town as well. As far as we know, it does not seem like the Russians were able to penetrate the city itself, but they were able to set up shop in the villages around the city. And that's where, as you hear in this video, families in this small village were living, really under the yoke of this Russian occupation. And they describe Russians, abusing them in many ways. They describe them being drunk and aggressive and violent with them. Another one of their neighbors who was not in this video described being hung from a tree. He was a military-age male, and he describes being beaten and harassed for days and giving up on life, thinking he was going to die at any moment. And we've heard many of these stories from different areas, often in the villages and towns outside some of the bigger cities, because as Russians, again,
strategically tried to encircle cities and would set up their military lines outside cities. It was actually in these smaller villages where a lot of the real brutality occurred. And we are still at the point where we are just getting our first glimpses in these past few days as we're able to travel to them on our own, to report independently, to learn firsthand on these true atrocities suffered by Ukrainians. And John, you're on your way from Ukraine's capital, Kiev, now to Lviv. Could you talk about what you're seeing on your drive, and also if you've been in some of the areas that were originally Russian occupied? I'm wondering, because we've heard a lot of the reports about Russian missiles and artillery hitting the Ukrainian cities, but clearly, if the Russians were occupying these areas, I assume that the Ukrainian military was using its quite considerable firepower supplied by the U.S. to attack the Russians. So I'm wondering if you're seeing any results of destruction in this area that maybe was not caused by the Russians, but was actually caused by Ukrainian fire. Yeah, this is the kind of thing that investigators are going to be looking at for a very long time. And we were in another small village called Andriivka, outside a city called Makariv recently, and that's a great example. I spent three reporting days visiting Makariv, which is a bit to the west of Kyiv, and our first 2 days we could barely move in and around the city because the shelling going in both directions was nonstop. There was barely a minute or two that went by without more shelling, and that was going in both directions. At that point, we were on the Ukrainian side of the line, and on the third day was the day after the Russians. John, we're losing you a little bit. Go ahead. There's a lot, as you mentioned. Okay. On the third day, take it from on the third day. Absolutely. On the third day, we were able to cross in because this is our third reporting day. It was the day after the Russians had pulled back, and there was massive destruction. We were basically able to get to this small village where the Russians had set up a front line, and when they had left, the locals who had survived, and they mentioned that scores of civilians, their neighbors, had been killed by the Russians. They described. Well, John, we're going to go to one of the people you interviewed. This is Valentina Omelchuk, a grandmother who spent a month hiding out in her basement, more like a root cellar in Makariv, Ukraine, west of Kyiv. She told you she hadn't spoken to her daughter or grandchildren in Kyiv in a month. This is part of the Washington Post video report you published Monday. It was scary. It was scary every day. It was scary in the morning and at night. During the night, because they were fighting one another with tanks, and it was frightening. It was scary when the planes were flying towards Kyiv. They were flying right over us, and we could hear them. Then, every day, 2.5 days were particularly horrible. The Russians were coming forth like cockroaches. They would be fought back and keep coming again. It was too scary to leave. We had missiles flying over us all the time. This here is my house. Thank God it survived. I'll open it and show you everything. Only I have a dog. It's small, but loud. My baby. Where's my baby? My defender. My little guard. I have windows here. I'll show you. All shot through. I couldn't even clean it up because we were afraid they had thermal imagers. This is a shell fragment. We'll keep it as a memory. It's usually just me living in this house, but I also have my grandkids and my daughter. They come here on weekends.
This is the little girl's room. It's the lightest and the warmest one. Well, it's no longer warm because the windows are broken, so it is cold and there's plenty of trash. We'll clean it up and it will be fine. I haven't spoken with my daughter since March 2nd. She said, "Mom, if there's no proper connection, please text us." I would send them, but they wouldn't get through. I would get messages that my texts hadn't been sent. And then, while my smartphone was still working, I'd rewatch Viber videos. As if I was talking to them, reread their messages. And then that ended too. And that's it. I was left alone with my dog. That's Valentina Omelchuk, a grandmother who spent a month hiding in her basement in Makariv, Ukraine, west of Kiev. John, she told you she hadn't spoken to her daughter or grandchildren in Kiev for a month? Yes, that's right, Amy. And we actually were able to, this is one of the moving around in conflict situations where you're crossing lines that sometimes civilians aren't able to for a number of reasons. But we were actually able to, after we filmed this piece, contact her daughter who's with her grandchildren in Kyiv right now, and at least pass along that her mother was alive. We sent a picture, but it was the first her daughter had heard any news in weeks. And, you know, you count your small blessings there when you see them. But again, this is one of countless families that have been separated and cut off from each other and have no access to basic communications and have no way to know if they're clinging for the best right now. But I'm asking for folks to bear with us in talking to John. It's amazing we even have this connection. He is in Rivne, about an hour from Lvov. In fact, as we watched that grandmother, I was thinking of my own because she was born in Rivne. We called it Rivne in 1897. But we're going to turn to another of John Gerberg's video reports for the Washington Post from early March. He was in a residential area 50 miles south of Kiev called Bielets-Verkva. He spoke with a 15-year-old girl named Anna Bogalchuk, who described how she was home in bed when a blast hit. When it happened, I was in bed. I just woke up, and I saw the white light everywhere. I could hear the debris falling and started yelling to my family if they were okay. On the one hand, it's all horrible, but I'm glad that everyone is alive and well. We also have a cat and haven't been able to find it yet, and I'm so worried about it. I got several injuries, but they are all light, just scratches from debris and a state of shock. But I think everything's going to be fine, and we can rebuild it all. There's nothing here, just the residential area on the riverbank. People walk around here. It's a nice place, nothing military here. Our military are trying hard and doing their best. They are helping with what they can, and it's great. They support our country. To all the people, to all the countries that are not telling the truth, we are really getting attacked. Not just the military objects, but common people. It's a nightmare, and I don't know how you could believe anything else. That's Anna Bogalchuk. She was 15 years old in Bila Serkva, about 50 miles south of Kiev. John Gerberg, tell us more about this teenager. Absolutely, yeah. Anna was she's a
an impressive young woman. I mean, we were reporting in Bielefeld what we heard a very large blast. While we John, we can hardly hear you, so we're going to go to another of your reports and call you back. This is part of John Gerberg's Washington Post video report from last March when he was in a village called Moschin, about 20 miles north of the capital, Kiev, and spoke to Ukrainian soldier Anton Kolombet. First, a warning to our viewers, this video again contains graphic content. Well, Moschin is a small village at north of Kiev, situated on the bank of the river Irpin. It's just a small village, but what can I say? It was important for them to take it, and that means that it was important for us to defend it. You can see the fighting here was very actually intense. But we won, and they retreated. Ooh, look at that. That's the backpack of a Russian soldier. Looks like former Russian soldier, of course. Here, you can see it. Ooh, he forgot his ammo when he was running. And the scissors. Well, that's not very useful. Look, he was a machine gunner. Yes, he was a machine gunner. You see, I'm just looking for something useful, because that's how war works. I don't believe in any negotiations with Russia ever. I saw this war from 2014. I know that no one can trust Russians, never. The only language that Russian understands is a language of force. It's terrible to understand that those people, those families who lived, you can see the parts of their lives. They are there. They are lying on the ground. The child bicycles, some toys, books. You can understand that you are walking through the lives of people who never expected the war, but still the war just destroyed everything. We had a dream that when we will be victorious and when the war will end it, we will create a building company and we will rebuild everything. But that's like a small dream of Ukrainian soldier, to go back, for example, to Moschin and to build some houses there. I think that will be great. That Washington Post video report. John Gerberg, tell us more about this Ukrainian soldier. Sure, Amy, and apologies for the connection issues, but as you can see, I mean, this is an issue we've run into in a lot of our reporting, and it's been one of the big challenges of, illuminating what is going on in so many of these regions on the front lines and small villages that are occupied and cut off from the fighting, by the fighting in various ways. So what you just heard and watched was a report we did in a small village of Moschin, which is a quaint Ukrainian village that became a real hotspot for fighting. It's right outside, right on the edge of Kiev, and the Russians had taken it over and were using it as an entry point into Kiev, or at least trying to, and the Ukrainians fought very hard to take it back. And we spent time with soldiers who had been camped out there on the front lines, fighting day in and day out. It had been such a contested piece of land that, and it's a remote village in the woods. So soldiers were having to do 5 and 6 day rotations before they could rotate themselves back out to a rear base. So you can imagine how taxing that was on their, bodies and psyche to be 5-6 days on a front line under constant shelling. I mean, you can hear in some of the video when we're there, the bombs just constantly going off. So, this is a war that, in over a month has had an unbelievable impact on both the men and women fighting it and the men and women who are stuck
in the middle of it as civilians by no choice or act of their own. And the impact of that is still being felt and realized around the country. And John, in your reporting, what most surprised you in terms of the scenes and the people that you interviewed? A lot. I mean, I'm constantly blown away, Juan, by we talk about resilience a lot, but the ability of everyday people, young and old, men and women of means and poor and working people, to be able to not just survive, but adapt to the situation and take care of each other and find ways to feed each other and shelter each other and get each other to safety. So I'm constantly just in awe of the people, many of whom I think you've gotten a chance to meet even briefly in some of these videos. I've also been amazed to see, one of the interesting things about this conflict is the closeness of Russian and Ukrainian society, and so many of the people on both sides of this fight, this war, speak the same language, or at least understand the same language, and have family on both sides, and have connections that go back many generations. And when Russians occupied some of these villages that we've been to, they were living side by side with civilians, and even though they were occupying their villages with military might, they were also, some of them would share meals and would, in a moment of sympathy, give some food to a child. But then we heard one story with the family you met at the beginning, where one Russian took sympathy on their kids and would bring bread to their two younger sons. But then other Russian soldiers, didn't like this, that their fellow Russian soldier was taking pity on the children. So they beat him. They described it as almost beating him to death in their own yard for being nice to these Ukrainian children. But you see how even a mix across that divide, there are these extensions of sympathy and compassion that are then, of course, completely corrupted by the absolute depravity of war. But seeing that kind of complexity, even in such a just brutal warscape, is something I'm still trying to wrap my head around. John, we're going to go to your last video report that you filed Sunday with the Washington Post from the village of Andriivka, west of Kyiv, where Russian troops withdrew after a month of waging war and terrorizing residents, as you describe it. First, a warning, again, the graphic images. This is Vadim Bashko. This is the central street. It was hit the worst. 40 people are missing, young people. No one can find them. People say they were held in captivity. What happened next, no one knows. Bodies are being found here and there. A lot of houses are mined. They've placed tripwire. People were shot here. There's one body. Another body's in the box. The military didn't want to take him. The body is face down, hands tied. If you pull him, there could be an explosion.